Yes, this is biology platform. Okay. So today we will learn about plant physiology. We know that plant physiology. That means in this topic we studied about physical activities of plant that perform by our plant for their physical needs. Okay. So firstly we know that the father of plant physiology is who? Stephen Els. And who is the father of Indian plant physiology? We know Jesse Bose. Okay. So in plant physiology, the first chapter is transport in plant. Okay. Today we will discuss about transport in plant. Okay. So firstly we know what is transport. Transport means होता है translocation or movement of molecule, minerals, water, food, one place to another place, and one place to another place of plant. That means if root absorbed water, वाटर को हम कहाँ तक पहुँचाएंगे प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक लाइक स्टेम सूट एंड लीव्स. ऐसे ही हम जानते हैं वी नो दैट लीव्स प्लांट लीव्स आर सिंथेसाइज फूड ना बट द नीड ऑफ फूड आर stem root. Okay, so how food are translocate are distributed to root, stem and different parts of plant. The process by which water, mineral are translocate or transport from one place to or one part to another part is known as ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. ठीक है. सो ट्रांसपोर्ट में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. वी नो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक्स प्लेस वाया जाइलम, whereas transport of food takes place via phloem. Okay. Via xylem, transport of water and minerals occur only unidirectional. That means root to leaf, not from leaf to root or leaf to stem or stem to leaf or stem to root. Only root to leaf, root to stem. Okay. Only upward movement takes place. Okay. Whereas in transport of food, the movement is bidirectional. Upward and downward both type of movement are takes place. Okay. Now transport in plant are also two types: short distance transport and long distance transport. Short distance transport occur, that means cell to cell or nearest cell. Okay. And short distance transport occur due to concentration gradient. That means where concentration of molecule or matter is high, the movement of molecules or atoms are takes place higher concentration towards lower concentration. Okay. Occur via diffusion or active transport. Okay. Whereas long distance transport in bulk mass, यानी कि बल्क में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में occur. Okay. Occur due to pressure gradient. That means if pressure are exerted on bulk mass of food, then food is translocate via one place to another place. Occur via translocation. Okay. Translocation means movement of food or minerals one place to another place. Okay. Now type of transport, we know there are two type of transport. One is active transport. There is use of energy or use of ATP takes place. Where second one is passive transport. Okay. Firstly we know about active transport occur from lower concentration to higher concentration and uphill transport takes place.
use of ATP takes place in active transport. Selective or specific type is, and example of active transport is sodium and potassium pump. Okay, सोडियम पोटेशियम पंप हमने सुना है आपके किसमें, मसल्स कंट्रैक्शन एक्सपेंशन में. ओके, और सेंसिटिव टू इनहिबिटर, जो इनहिबिटर होते हैं जो ब्रेक करते हैं ट्रांसलोकेशन, उनके अगेंस्ट ये सेंसिटिव होते हैं, यानी कि रिएक्शन करते हैं. ठीक है. यूज ऑफ 1 ATP प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सपोर्ट और इफ्लक्स ऑफ 3Na+. एक ATP का यूज जब ये करते हैं तो एक 3Na+ को बाहर करते हैं, और क्या करते हैं, 2 पोटेशियम को इनफ्लक्स यानी कि अंदर करते हैं. और ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये सोडियम पोटेशियम पंप इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एंटीपोर्ट सिस्टम. ओके. नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट अकर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन. डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, नो यूज ऑफ ATP. देयर इज two type, osmosis and diffusion. Both are a type of passive transport. That means there is no need of ATP. Okay. Osmosis is the movement of minerals or water molecules from high to low concentration. Okay. Transport only solvent. In osmosis process there is only transport of solvent takes place. Okay. Whereas in diffusion, transport of all solute solvent, that means liquid gases, सॉलिड सभी का ट्रांसपोर्ट किस में होता है, डिफ्यूजन में. ओके. और इसमें क्या होता है, इसमें भी हाई टू लो होता है, बट इन द ऑस्मोसिस देयर इज नीड ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की नीड होती है किसमें, ऑस्मोसिस में. ठीक है. बट देयर इज नो नीड ऑफ मेम्ब्रेन इन डिफ्यूजन. आप देखते हैं अगरबत्ती की खुशबू जो होती है, धूप जलाया जाता है घर में, तो वो बाहर तक फैलती है, तो वही प्रोसेस क्या है, एग्जाम्पल किसका है, डिफ्यूजन का. डिफ्यूजन आर आल्सो टू टाइप, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ओके. इन सिंपल डिफ्यूजन नो नीड ऑफ मेम्ब्रेन आर प्रोटीन चैनल. दे आर लाइपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ओके. बट इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देयर इज नीड ऑफ channel, protein and membrane. They are hydrophilic, that means water loving. Polar molecules specific होते हैं और sensitive होते हैं किसके against, inhibitor के against. Okay, clear. Now we also see about example of facilitated diffusion. Okay. First one is porine protein, found in outer membrane of plastid mitochondria and help in facilitated diffusion. Porine protein is help in facilitated diffusion. Okay. Second one is aquaporine. Aquaporine is help in transport of water. 8 aquaporine form a one water channel. Okay. Now factor affecting of diffusion. Size of, if the size of molecule is small, then the faster diffusion takes place. सेकेंड वन इन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, इफ द लाइपोफिलिक यानी कि लिपिड लविंग मॉलिक्यूल्स है तो फास्टर डिफ्यूजन होगा. कंसंट्रेशन अगर हाई है तो डिफरेंस कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो तब भी फास्टर डिफ्यूजन होगा. टेम्परेचर हाई है तब भी फास्टर डिफ्यूजन होगा. प्रेशर हाई है तब भी फास्टर डिफ्यूजन. ओके. डेंसिटी क्या होती है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग होती है. ओके. अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, डिफ्यूजन स्लो होगा. ओके. सो थैंक यू.